जत सच संयम तीरथ उना का धर्म है, कल में कीर्त हर नामा। उपदेश चौवर्णा को सांझा, उपदेश धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। खत्री ब्राह्मण शूद्र वैश्य, उपदेश चौवर्णा को सांझा। उपदेश चौवर्णा को सांझा। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ चौवर्णा को सांझा। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए। ओ सेवे गोसैया कोई अलाए, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए। ओ सेवे गोसैया कोई अलाए, कोई सेवे गोसैया कोई अलाए। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए,
ਪਾਪੀ ਤਰਿਆ ਸਭ ਪਾਪੀ ਤਰਿਆ ਸਭ ਪਾਪੀ ਤਰਿਆ ਸਭ ਪਾਪੀ ਤਰਿਆ ਉਸ ਕਾ ਮੋਹ ਡਿਠਾ ਉਸ ਕਾ ਮੋਹ ਡਿਠਾ ਸਭ ਪਾਪੀ ਤਰਿਆ ਸਭ ਪਾਪੀ ਤਰਿਆ ਸਭ ਪਾਪੀ ਤਰਿਆ ਸਭ ਪਾਪੀ ਤਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਸੁਰਗ ਨੂੰ 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 ਉਸ ਕਾ ਮੋਹ ਡਿਠਾ ਉਸ ਕਾ ਮੋਹ ਡਿਠਾ ਸਭ ਪਾਪੀ ਤਰਿਆ ਸਭ ਪਾਪੀ ਤਰਿਆ ਸਭ ਪਾਪੀ ਤਰਿਆ ਸਭ ਪਾਪੀ ਤਰਿਆ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਦੀ ਬਾਣ ਸੋ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਦੀ ਬਾਣ ਸੋ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਦੀ ਬਾਣ ਸੋ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਦੀ ਬਾਣ ਸੋ ਸੋ ਸਭ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਸਭ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਸਭ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਸਭ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਿਲਿਆ
खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो पाप की जंज न काबलो धारा धाया चोरी मंगे दान वे लालो ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਪਖੰਡ ਤੋਂ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ ਜਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੇ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਨ ਟੂਡੇਜ਼ ਵਰਲਡ if someone wants to do bhakti, ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, if someone wants to get closer to ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦੇ ਪਖੰਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ। ਕਰਮ ਦੇ ਪਖੰਡ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਖਾ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਨ ਮਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਆਮ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਆ? ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ ਜਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ by doing ਕੀਰਤਨ you'll be saved from all these pakhand, these false rituals. If you want to become closer to the Guru, you have to leave the rituals behind. This is not a ritualistic path. This is a path of freedom, of spiritual freedom. The Guru is saying that if you wish to worship God, if you want to do bhakti, if you want to do worship, then do worship through the kirtan. You know, some faiths call him Ram, some faiths call him Khudai. Koi bole Ram Ram, koi Khudai. Some people say Ram Ram, some people say Allah Allah, some people say Khudai. Koi seve Gosaiya, some people say Gosaiya, koi Allah. पर गुरु कह रहा है, God saying Karam Kareem, कि he is only one, Kirpa Tar Rahim, and he shall bless you. And then again Guru कह रहा है कि कोई ना वे तीर्थ. Some people, so those things that we were talking about, ritualistic living, है ना? Some people take baths in holy waters. कोई ना वे तीर्थ, कोई तीर्था दे जाके स्नान कर रहा है. Koi Hajj jaye, it's quite straightforward. Some people go to Hajj, some people go to the Muslim places and say that this is our worship by visiting a certain place. Koi kare puja, some people do puja, so get like a plate of candles and go round and round in front of a deity. That's called puja, or worshipping, something also called puja. Koi sir nawai, some people are bowing their heads in different directions of the world. God resides in the west side, so I shall bow to the west. These are, can you see how these can all be, they can be used in a positive way as well, but these can become ritualistic ways. God only lives in the west. But Guru is joining us to something even more powerful. Koi pade Ved, koi Kateb. Some people read the Vedas, Hindu scriptures, koi Hinduan de Vedan pad raha hai. Koi pade Kateb, koi Quran pad raha hai. किताब ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਆ. ਕੋਈ ਉਡੇ ਨੀਲ, ਕੋਈ ਸਫੇਦ, ਕਿ ਕੋਈ ਨੀਲੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆ. ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਨੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਪਾ ਰਿਹਾ. ਕੈਨ ਯੂ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਆ. ਇਟਸ ਅ ਮਚ ਬਿਗਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿ just by wearing a certain color doesn't mean that you're more of a worshipper than anybody else.
These are all, can you see how these things can really take our mind off the true worship of the Lord, and it can connect us to all these false things. कोई बंदा कहे कि मैं नीले कपड़े पा के ते मैं मक्के वाले मैं पूजा कर रहा है and I'm a religious person. No, it's not that. Religion is inside us. And it's inside us what we project inside our body. है ना? कोई कहे तुर्क, कोई कहे हिंदू. We like to put labels on things. You know, the human race, we love to put labels on different things. That's a certain person, or that's a certain sect. Can you see how, you know, that's our nature, animal instinct. Those people are different from us. But are we really different? Are we not on the same journey, all of us? You know, it's a marathon, some might be running, some might be walking, but our direction's the same. If you look at Sri Harmandir Sahib, the Darbar Sahib da naqsha hai, darwaje ta चार है ना, सारे ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ कि दरवाजे चार ਆ, पर दरबार ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਕਿੰਨੇ ਰਸਤੇ ਆ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਨਾ. There might be 4 doors, and we might say कि ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸ਼ੂਦਰ, ਵੈਸ਼, ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਵੈਸ਼ਨੂਆਂ ਨੂੰ, ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ, all the 4 types of class systems, they're all welcome. But the true path to salvation, truth path to Vaheguru Ji, to God, there is only one path. And Guru is saying कि कोई कहे तुर्क, कोई कहे हिंदू, कोई बांछे पिस्त, कोई कहे सिरगिंदू, कोई कहते कि मैं जन्नत नूं जाना आ, जन्नत नूं, कोई कहते कि असीं इत्थे जाना, कोई कहते इत्थे जाना. गुरु कह रहा जे जाना ही है ना, इत्थे चल जा एक बार. इत्थे आ गया ना ते जन्नतां, मुक्ति, सब कुछ तेनों तेरे अगे आ जाना. तेनों लोड़ तू मंगना ही नहीं, है ना. पर जे इत्थे आ जा, हाजूर च आ जा. If you live in the moment, come now, come here. Kaho Nanak jin hukm pashata. Oh Nanak, those who actually realize the essence of life, hukm, those who realize ki what God's will is, those who understand what God is really trying to tell us, what His will is, Prabh Sahib ka tin ped jata. Those who knows the secrets of Vaheguru. Ped meaning koi ped, koi sache paatshah jada ped sikhana chaਹੁੰਦੇ ਆ. कह लो secret कह लो भावें, पर सानू तो secret नहीं साढ़े वास्ते. Guru Sahib is not really a secret to us, because Guru Sahib has shown us the true path. है ना? ते ओही गा कर्म धर्म पाखंड जो दिस है. Some might feel good by helping somebody, but are we helping ourselves as well? Join closer to Vaheguru Ji. Karma, dharma, pakhand jo dis hai, hypocrisies, what we do to somebody else, will we do it to ourselves? Can you see? These are all virtues. We have to develop our virtues in life. Karma, dharma, sometimes we feel we're doing worship of Vaheguru Ji, we're doing worship of Guru Granth Sahib Ji by doing certain rituals. कोई पंजाब दे विच तुहानू पता ही है, किते दाल देती, किते कुछ चढ़ाता, किते कुछ करता. गुरु कह रहा ये सारे पखंड आ. मैं किसी दे धर्म दे खिलाफ नहीं बोल रहा, पर गुरु सानू एक धर्म, एक नवेखला धर्म दे रहा आ जिहदे विचों तुसी बंधना तो मुक्त हो सकदे आ. This is one path where there is no stopping you from joining to Vaheguru Ji. But sometimes we put so many things in front of us, we put obstacles in front of us that do not help our connection to Vaheguru increase. निर्बाण कीर्तन गावो करते का. गुरु कहता कि जे तू कुछ चाहता है अपने जिंदगी दे विच ते निर्बाण होके कीर्तन करना. कुछ होर गल है. कीर्तन ओ हुंदा एक कीर्तन हुंदा है कि किसने कुछ अगे रख के कि बाबा जी कोई शब्द पढ़ दो, कोई आ कर दो, ते मैं थोड़े लिए पढ़ रहा है ना. Can you see? Someone might say to me, "Oh, excuse me, can you do some shabad that you put here? Oh, can you do me? Gujarati Dadia, you know, they charge extortionate amounts of money to do kirtan, right? And they're making a living off it to do that. But to be fair with you, Nirvan Kirtan is kirtan without asking for anything. It's kirtan for the soul. Because if someone does kirtan, if someone sings Gurbani, sings Shabad, sings Guru's hymns, without asking for anything, the effect will be 10 times more. Because he is not worried about the tal, he's not worried about the saj, he's not worried about the instrument, he's worried about focusing on Vaheguru.
कोई अगे पौंड रखे, कोई 100 रखे, कोई 1000 रखे, उनकी कोई मतलब नहीं है पैसों का। उन्हें निर्वाण कीर्तन करना, उन्हें he the same way one helps the poor without asking for anything in return. Guru is saying do the same with kirtan. ऐसा कीर्तन कर मन मेरे इहाँ उहाँ जो काम तेरे। और तू ऐसा कीर्तन कर जड़ा कीर्तन दे विच कुछ मंगना नहीं है, तो वो कीर्तन आ कि तेरे अगे जाके भी काम आएगा। ऐसा कीर्तन कर मन मेरे इहाँ उहाँ जो काम तेरे, क्योंकि that कीर्तन you sing here, it will come, it will be used as currency for when you leave this earth. It will come in currency. You will need to use it for when you go further. And doing Nirvan Kirtan Gavo Karte Ka Nimak Simrat Dit Shute. It will break you away from all your attachments in life. If you ever need help, there's countless stories. Because the reason why I thought we would discuss Kirtan is because we're celebrating Guru Granth Sahib Ji's Pehla Prakash. And Guru Granth Sahib Ji de vich ki a Kirtan Shabad to ilawa aur kuch nahi hai nahi. Shabad. Asi Shabad nu kamauna ya. We're going to sing this Shabad. And in life, wherever we are in life, it could be sometimes in life we have high moments, we have low moments. But one thing you got to realize is if you hold on to Guru's Rasta, Guru's Shabad, if you hold on to the Shabad, wherever you are, by singing that Shabad, you'll be able to help your mind and become free. You know, today we speak about mental health, right? Loads of people go through mental health. It could be, you know, someone might look on the outside, might look happy, but inside you don't know what they're going through. You really don't. Nothing's black and white in the world. But one thing that has helped people in their life is Shabad. By singing a Shabad, by doing something, your mind is then taken away from what they're thinking of and you become closer to the Guru. And it will help you. And once you start singing the Shabad, Guru will start teaching you what it means as well. It will transform your life without you even knowing what's happened. You know, sometimes we have lows, sometimes we're high. When we're all happy, does one think of Guru? When we're so excited, all we want to do is enjoy that excitement with our friends and family. We don't once think that who actually gave us that excitement. But when we're in our lowest points in life, then Gurdwara jaake better do ardas to Guru Sahib Ji. But Guru's saying that secret is that one person who remembers God in both happiness and sadness and is remembering God all the time, that's the secret. He is the one who will be free. He is the one who actually get happiness in life. So we'll read this Shabad, Aisa Kirtan Karman Mere. And let's try and close our eyes and sing this Shabad. And really focus on what Guru is saying to us. And even if we can remember, je assi ek line vi assi sade zindagi de vich yaad rakh li na, Guru कहना ऐसा कीर्तन कर ला जे तेरे यहाँ mean now उहाँ अगे जाके तेरे काम आएगा. एक currency वरतांगे, currency दा भाव आ ए साडे ਲਈ अगे जाके currency मिलेगी, पैसे होणगे साडे ਲਈ, धार्मिक पैसे कह लो, है ना. अगे जाके फिर असी साडे दरगाह च काम आएगी कीर्तन. जिन्ना कीर्तन कीता आ, जिन्नी भगती कीती, जिन्ना बाणी पढ़ी आ, है ना, सुनी आ, वो दरगाह च काम आएगी. सो सारियां ने अखा बंद करके एकाग्रता चित होके एक मन हो एक चित एक मन. Just close our eyes, focus on the Shabad. Shabad is so powerful that even if we don't understand what it's saying, it has this magical effect to it that can turn iron into gold. That's how magic Shabad is. Oh, iron like mind. Iron like mind. You know, our mind can be like iron that it doesn't move. It's just fixed on one thing. And iron is rust. Our mind can get rusty as well. And by doing Kirtan, Guru is saying by singing, by doing Simran, that rust is then deleted from our mind. And that you clean the iron, and you clean it so much that iron turns into gold. So do you take it? कीर्तन कर मन मेरे, ऐसा कीर्तन कर मन
को मिलिया जिस मस्तक पागा तिसका हृदय रविया प्रभ सो रविया सोए तिसका हृदय रविया सोए मन तन शीतल निर्जल होए मन तन शीतल निर्जल होए ऐसा कीर्तन कर मन मेरे ऐसा कीर्तन कर मन मेरे इहाँ उहाँ जो काम तेरा इहाँ उहाँ जो काम तेरा ऐसा कीर्तन कर मन मेरे ऐसा कीर्तन कर मन मेरे जा सच पत पौ आपदा जाए जास जगत आपदा जाए सावत मनुआ आवे खाए तावत मनुआ आया बैठाए जा सच पत फिर दुख न लागे जा सच पत फिर दुख न लागे जा सच पत ये हमें पागे जास जगत ये हो मैं पावे जा सच पत बस आवे पंचा जास जगत बस आवे पंचा जा सच पत हृदय अमृत संता जास जगत हृदय अमृत संता जा सच पत ए कृष्णा बुझे जास जगत रे कृष्ण जा सच पत हर दरगाह सिजै जास जगत घर कैसे जा सच पत दरगाह सिजै जास जगत तर कैसे ऐसा कीर्तन कर मन मेरे ऐसा कीर्तन कर मन मेरे इहाँ उहाँ जो काम तेरा
जी का खालसा चलो पाठ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम।